मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि दुनिया को पाकिस्तान की इमदाद के लिए आगे बढ़ना होगा। वो अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद की कोशिश करेंगे। उन्हें मुतासरीन सैलाब से मुकम्मल हमदर्दी है। वो सखर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। We are in total solidarity with the Pakistani people. We will do everything we can, not only to use our limited capacities, but to raise awareness and to request those that have the capacity to support Pakistan to request that they do it. They do it now, they do it massively, and they do it also looking into the preparation of this country to face future challenges, to be able to protect their population when those future challenges are coming. Our commitment, our very strong and emotional solidarity is something you can count on. रुक करते हैं औस्ता मोहम्मद का वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इस्लाम मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा, और उसके बाद उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई है। औस्ता मोहम्मद में भी वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्लाम मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा किया और इस दौरे के बाद उन्होंने ब्रीफिंग भी ली है। और जो सैलाब से तबाहकारियाँ हुई हैं, मुराद अली शाह की जानिब से उन्हें बताया गया कि अब तक कितनी तबाहकारी हो चुकी है, लाइफ स्टॉक को कितना नुकसान पहुँचा, इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है वो किस हद तक तबाह हो चुका है। और उसके साथ साथ अंतोनियो गुतेरेस की जानिब से एक छोटा सा खिताब भी किया गया। उनकी जानिब से कहा गया कि इसमें कोई शक नहीं है कि बेशुमार तबाही हो चुकी है पाकिस्तान में, और उनकी जानिब से एक तखमीना बताया गया था। उनकी जानिब से कहा गया था कि $30 बिलियन कम अज़ कम इस वक्त चाहिए होंगे इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहाल करने के लिए। इस वक्त भी आप नाज़िर देख सकते हैं, इस वक्त अंतोनियो गुतेरेस और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो भी मौजूद हैं, और औस्ता मोहम्मद का इस वक्त फ़ज़ाई जायज़ा लिया जा रहा है। दूसरी जानिब आर्मी चीफ आज सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ दादू में सैलाब से मुतासरा अफराद के साथ मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ इमदादी सरगर्मियों के हवाले से बातचीत करेंगे। आर्मी चीफ इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले जवानों से भी मिलेंगे। आर्मी चीफ आज सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे और वो सैलाब से मुतासरा अफराद के साथ मुलाकात भी करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे, जो सहूलियात दी जा रही हैं उस हवाले से, और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से भी बातचीत करेंगे और इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले जवानों से भी वो मिलेंगे। आर्मी चीफ आज सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वो दादू में सैलाब से मुतासरा अफराद के साथ मुलाकात करेंगे और इमदादी सरगर्मियों के हवाले से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही साथ इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले जवानों से भी वो मुलाकात करेंगे और आर्मी चीफ आज सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। और बदीन में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों के बाद मच्छरों के बाइस मलेरिया फैलने लगा है। मुतासरीन की बड़ी तादाद मलेरिया का शिकार हो चुकी है, जबकि ख़वातीन और बच्चे भी मुतासरीन में शामिल हैं। डॉक्टर्स की कम तादाद के लिए सूरत हाल को संभालना मुश्किल हो गया है। इस हवाले से भी आपको मज़ीद बताएंगे। इस वक्त आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अंतोनियो गुतेरेस औस्ता मोहम्मद पहुँच चुके हैं। वहाँ पर वो फ़ज़ाई जायज़ा लेने के बाद पहुँचे हैं और सैलाब मुतासरीन के साथ बातचीत भी करेंगे और साथ ही साथ उन्हें मज़ीद भी ब्रीफिंग दी जाएगी कि यहाँ पर कितना नुकसान हो चुका है और नुकसान का तखमीना यहाँ पर क्या है। औस्ता मोहम्मद में इस वक्त वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं और औस्ता मोहम्मद में इस वक्त मौजूद हैं। इससे पहले उन्होंने फ़ज़ाई जायज़ा लिया, सखर में भी मौजूद थे, वहाँ पर भी उन्हें ब्रीफिंग दी गई और वज़ीर आला सिंध की जानिब से ब्रीफ किया गया और बताया गया कि इस वक्त तक कितना नुकसान हो चुका है, लाइफ स्टॉक किस तरह से तबाह हो चुकी हैं, इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह तबाह हुआ है, बिजली का निज़ाम किस तरह से दरहम बरहम हुआ है, और जितनी भी तबाही हुई है उस हवाले से डिटेल से बताया गया है। तो इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अंतोनियो गुतेरेस औस्ता मोहम्मद में मौजूद हैं। इससे पहले उन्होंने एक फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया और तखमीना लगाया गया कि किस तरह से और कितना नुकसान हो चुका है। सैलाब मुतासरीन के ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा इस वक्त सिंध और बलोचिस्तान के दौरे पर मौजूद हैं। जबकि सैलाब से तारीख़ की बदतरीन तबाही हुई है, ये उन्हें ब्रीफ दिया गया था, जबकि सिंध के 24 अज़ला बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। इस वक्त मज़ीद भी ब्रीफिंग दी जा रही है, मनाज़िर आपके सामने। And this is the largest province occupying 44% of Pakistan and rich in mineral resources. Red districts are the heavily affected and we are here at the moment. So this is bordering the province of Sindh, the north of Sindh where you have just visited and coming from. Excellency, 270 people have perished in last 3 months.
The rainfall started on 13th of June and continues until recently. 1.3 million people have been displaced. 185,000 households have been either completely damaged or partially affected. 500 livestock perished. 100,000 poultry have been killed. So a lot of infrastructure has been damaged. Bridges, one railway bridge also caved in. 900,000 acres of land has been affected, agriculture lands and orchards. So the government of Balochistan evacuated more than 125,000 people safely and reached to 1 million of people who were trapped because of the road disconnectivity. We provided almost 119,000 people, families with food packs. There is a gap of 66,000. 56,000 tents were provided. 129,000 tents are still a gap. Next. Because these districts, 5 districts we are here, these are completely inundated. Still the water is there in the fields, houses have been raised. So we even lost half of our healthcare facilities. So we have conducted emergency medical camps. 1,476 camps have been held in these 3 months, and more than 353,000 people have been treated. At the same time, 540 veterinary mobile camps have been set up, and more than 1.4 million animals have been treated, and 829,000 vaccinated. Next. So now we briefly focus the 5 districts which have been completely inundated and where we are here. These are 2 slides pictorial. This is a rescue effort going on. These are the fields, and these bridges and roads completely collapsed. This is the railway bridge which disconnected the Upper Sindh with Quetta. So this bridge is under construction at Mach in Bolan Valley. And we had to rescue, we had to reach to the people through helis to supply foodstuff. Excellency, we have prepared a brief rehabilitation plan. 185,000 houses badly affected, and the joint survey by federal and provincial agencies is under process, will be completed in 2 phases by end of September and at end of October. We estimate USD $245 million needed for reconstruction of those houses. And this rough estimate may increase. 9 lakh acres of crops have been completely damaged, or means I would say 0.9 million acres, or 400 hectares of land, 400,000 hectares of land. So we estimated 30 billion rupees, approximately $130 million needed to rehabilitate those who have been completely affected by these. Excellency, we prepared a complete Balochistan rehabilitation package, and I'm not going into the details. We have this package needed USD 1.028 billion to completely rehabilitate the physical infrastructure, the health, vet facilities, schools, colleges which have been damaged, and the houses which completely or partially. So way forward, this is the last slide. Excellency, Government of Pakistan and Government of Balochistan have been financing the rescue, rehabilitation, reconstruction phase, but the disaster is colossal, beyond comprehension and beyond the capacity of the provincial government. So we have requested approximately USD 1.028 billion from the federal government. UN OCHA has completed rapid damage assessment in 10 districts, and the rest of the districts are underway. And rehabilitation survey is also likely to be completed soon. Proper studies on climate resilient cities and infrastructure is the need of the hour, and effective coordination, proper management and transparency will be ensured. There is an urgent need to support from UN and donor agencies in the shape of grants, whether in cash or kind, because the people are waiting for their houses to be rebuilt where they can be settled. Thank you.
ایکسیلنسی جیسے اللہ کی طرف سے یہ چیزیں جو ہم پیدا کی ہے اس نے ہمارے اوپر یہ چیزیں آئی ہیں اور یہ سختیاں قوموں کے اوپر آتے ہیں ہمیں یہ چیزیں آئے ہیں انشاءاللہ ہم تیار تو نہیں ہے لیکن یہ کہ ہم کسی کے سامنے یہ نہیں کہیں کہ ہمیں پیسے دے لیکن جو اللہ نے لایا اور اس کے ضرور ذریعہ کسی کو بنا دیتا ہے کوئی بھی ذریعہ بن جاتا ہے ہم اس چیز کے لیے Excellency, the Chief Minister is saying that this calamity, this challenge has come by the act of the nature, by God. But this has also offered opportunities. The challenges are colossal and we have to respond with the help of the federal government and the donor agencies abroad. ہیلپ تو اللہ کرے گا اور زمین پہ جو ذریعہ بن جائے وہ ان کا نصیب جو بنا دیتا ہے اللہ خود زمین Okay, God will help and the people would like to reconstruct and rebuild themselves. I may say something. Yeah. There is only one point I disagree. Yeah. Can translate. Yeah. ایک چیز ہے جو میں اسے اتفاق نہیں کرتا جو آپ نے I کہا also believe in God. No. But it was not God. It was the humanity. کاربن ایمیشنز Carbon emissions and waging war on nature. انسان کا And the nature is کیا تو ہم striking نے back. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ So it's the responsibility is on people. human being. Agreed. جو نقصان ہوا ہے اس کا ہیلپ اللہ کرے گا ذریعہ کوئی یو این بن سکتا God will help, but UN or the federal government or the other donor countries will be helpful. Excellency, this is the largest province of Pakistan in terms of geography, in terms of population it's very small, but distance are very large and remote areas, and to reach to those areas is a very, very difficult task. Whatever infrastructure they had, it's washed away. We just saw a railway bridge which was built during the times of British Raj. That's gone. And bridges, flyovers, I've seen myself touring all these areas along with the Chief Minister. It's been terrible here. And they are all trying their best. They are trying to provide shelter, food. But this province, as I say, has lots of natural resources by the grace of God, but it lacks in terms of resources, in terms of finance and other resources. Then we need to focus this province after same very sharply. And in that, I think your interaction with the international community would be very, very helpful because they have to travel long distances. Road is not available, communication is not available, transport is not available, and look at the. So I think this province also needs equal, attention, if not more. So we go to the affected families in the tents. نے وزیر اعظم اور سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کو سلاف سے متعلق بریفنگ دی گئی ہے 2 روز پر مشتمل یہ ان کا دورہ ہے آج دوسرا دن ہے اور وہ مصروف دن گزار رہے ہیں ابھی وہ اوسطی محمد میں موجود ہیں اور ان کو تمام تر صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے اس کے بعد وہ سیلاب متاثرین سے بھی ملاقات کریں گے اور اس کے بعد سندھ اور بلوچستان کے دیگر جو سیلاب متاثرہ علاقوں ہیں ان کا بھی وہ دورہ کریں گے آج دورے کی شروعات سکھر ایئرپورٹ پر وزیر اعلیٰ سندھ کی تفصیلی بریفنگ سے ہوئی اور اس کے بعد اب وہ ضلع جعفر آباد بلوچستان کی تحصیل اوسطی محمد میں موجود ہیں اور ان کو تمام تر صورتحال کے حوالے سے بریف کیا گیا ہے اور سیلاب متاثرین سے بھی وہ ملاقات کریں گے بعد ازاں وزیر اعظم اور UN سیکرٹری جنرل لاڑکانہ بھی جائیں گے جہاں پر ان کی ملاقات لاڑکانہ اور اس کے گرد و نواح کے سیلاب متاثرہ علاقوں سے آئے لوگوں سے ہوگی UN سیکرٹری جنرل سیلاب متاثرین فرسٹ ریسپانس فورس ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف سے بھی ملیں گے وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو سمیت وفاقی کابینہ کے اراکین اور اقوام متحدہ کا وفد بھی دورے کے دوران ان کے ہمراہ ہے اور دورے کے دوران وزیر اعظم اور سیکرٹری جنرل سندھ اور بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی ویلکم بیک محض جھوٹی درخواست پر کسی شخص کے خلاف سیکشن 182 کی کارروائی نہیں ہو سکتی لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد شان گل نے قانونی نقطہ طے کر دیا ہے اسی پر بات کریں گے نمائندہ دنیا نیوز محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد اشفاق بتائیے کہ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں
जी बिल्कुल, झूठी दरख्वास्तें दायर करने वालों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई हो सकती है, इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद शान गुल ने बड़ा तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। जस्टिस मोहम्मद शान गुल ने अपने फैसले में ये लिखा कि सिर्फ दरख्वास्त दायर करने वाले, झूठी दरख्वास्त दायर करने वाले शहरी पर सेक्शन 182 के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। अगर कोई शख्स मुकदमा दर्ज करवाए और बाद में वो मुकदमा झूठा साबित हो तो फिर सेक्शन 182 के तहत उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद शान गुल ने शहरी मोहम्मद रफ़ी की दरख्वास्त पर 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। जस्टिस मोहम्मद शान गुल ने फैसले में लिखा कि शहरी मोहम्मद रफ़ी ने अपने घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने के हवाले से जो उनके खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी वो जस्टिस ऑफ पीस ने खारिज की। तो इस हवाले से दरख्वास्त गुजार ने अपने किराएदार के खिलाफ सेक्शन 182 के तहत कार्रवाई के लिए रुजू किया। जस्टिस मोहम्मद शान गुल ने कहा कि जब मुकदमा ही दर्ज, फिर सेक्शन 182 का कानून किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद शान गुल ने फैसले में यह भी लिखा कि सेक्शन 182 की कार्रवाई उस वक्त हो सकती थी जब किसी शख्स के खिलाफ मुकदमे से बरी हो जाए, तो उसके बाद झूठा मुकदमा दर्ज करवाने पर